या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। We will start the program with the stuti. We know that every beginning is start with the prayer. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Uma Maheshwarabhyam Namaha. Vakratunda
महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरणे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति सप्तमं कात्यायनिता षष्ठमं कालरात्रिश्च महागौरीदाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीश्च एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठे नर न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिं करं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां विद्यार्थी लभते धनम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिं करं प्रभो। ॐ गणपति नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अस्य विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। Thank you, Jairaj sir. So now I would like to request all our honorable guests to please proceed for the lighting the lamp. So every program is beginning with the prayer to God. Light, it's lighting the lamp, it's a symbolize that we are removing the darkness by the doing the light. ज्ञान से ही अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय तो सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपने प्लेस पे बैठ के इस लाइटिंग द लैम्प के साथ इस सो एज यू सी our guest has lighted the lamp. Thank you. Thank you, all of you. Now, we are moving to the next program of the entry of the graduates, that are students from the nursery. They have completed and their study, and now they are moving to the next year as junior KG. So now they will do the ramp walk in their special costume. आज हमारे स्कूल में क्या सेलिब्रेशन है? हाँ, मुझे पता है, आज इनका ग्रेजुएशन सेरेमनी है। तो क्या आपको पता है ग्रेजुएशन सेरेमनी का मतलब आखिर होता क्या है? हाँ, मुझे तो पता है। क्या हमारी प्यारी ऑडियंस को पता है? क्या आप सबको पता है?
तो चलिए हम बताते हैं आपको ग्रेजुएशन सेरेमनी का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये एक फॉर्मल फंक्शन है, जब 10th या 12th के बच्चे कॉलेज उनकी डिग्री लेने जाते हैं और उनकी डिग्री लेके जब निकलते हैं तब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। उसी टाइम उन्हें सर्टिफिकेट के साथ एक ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है। उसी तरीके से हमारे स्कूल में भी जब प्री प्राइमरी के टाइनी टॉट्स प्राइमरी सेक्शन में जाते हैं तब हम लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं। ओह अच्छा, तो आप सबको पता चला कि ग्रेजुएशन सेरेमनी का मतलब आखिर होता क्या है। थैंक यू। Special anchors will make their entry. So I would like to request to anchors. They will enter and they give their introduction, short introduction. Today's special anchor, they enter in the hall. They all are from the different standards. Now you can see the students who are standing in front of you. They're from the center, Kashvi Patel. She is studying in standard 4. Just beside her, that Aradhna, she is studying in standard 8. Kreya Patel, standard 8. Henny Chaudhary, Vedanshi Patel, they both are studying in standard 8. Just in राइट हैंड साइड काशवी जो गर्ल खड़ी है कॉस्ट्यूम में, उनके राइट हैंड साइड में जिगर, देन श्लोक, जिगर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 7, श्लोक स्टैंडर्ड 8, एंड रचित स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 7, and Kavya Patel, she's studying in standard 8. They are going to anchor the whole program. So anchors are requested to please come. गेस्ट आप रचित एंड जिगर के लिए बोल रहे हैं कि आप स्माइल करिए, और आपकी जब स्माइल हो रही है तो आप स्पार्क कर रहे हैं। स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स है आपके लिए। थैंक यू सर। सो नाउ द एंकर्स आर रिक्वेस्ट टू टेक योर place. Now we are moving to the next program. The entry of the graduates. So teachers, be ready for that. So as our two students explain about what is the graduation ceremony, now our students going to do the ramp walk. Now, with the leading of the teacher Ripple, all are tiny stars. You can see they are in the special costume of graduates. They are waving their hand. They are showing that degree, like a degree. They are looking very beautiful. From the both sides they are entering, and they will enter from the red carpet, which is in the center of the hall. So all put your hand together to welcome them. Clapping continue रहनी चाहिए. Teacher Rupal and Teacher Dupal. Teacher Rupal and Dipal, they are leading the shining stars.
So have a big round of applause for the students. ये इन्होंने ग्रेजुएशन से मतलब डिग्री ले ली, ये पता चल गया कि कितने डिसिप्लिन वे पे आके अरेंज हो गए. So now the anchors want to give their introduction. I am handing over the mic to them. Respected guests, principal ma'am, teachers, parents, and all my dear friends. Good morning to all. My name is Siddhi Maharaj. I am studying in 11th Commerce. I am the student representative of our MGCVS. Myself Kavya Thakulla and I am from standard 9th and I am the deputy student representative of MGCVS. I am proud to stand here as a student representative of our MGCVS. It is honor to represent all my fellow students. Our school gives us many opportunity to learn and grow. As the deputy student representative of MGCVS, I promise to support every student. Sports weeks teach us teamwork, discipline, and sportsmanship. Olympiad exam shaped our mind and increased our knowledge. I promise to listen, work, and together we will work and we will make our school proud. Activity builds our confidence and increase our creativity. Culture programs bring happiness and unity in our school. Thank you to our respected principal ma'am and teacher for guiding us always. So let's us learn listen together, and shine run together. So now I am introducing our hostess of this annual function. So first of all, Aradhna Chaudhary from Standard 8. Our second host is Jigar Bhagel from Standard 7. Next, Kriya Patel from Standard 8. Next, Slok Goswami from Standard 8. Next, Henny Chaudhary from Standard 8. Next, Kavya Patel from Standard 8. Next is Kashvi Patel from Standard 4. Next is Rachit Chaudhary from Standard 7. Vedanshi Patel from Standard 8. Thank you and enjoy the annual function. So यहाँ पे जो हमारे दो स्टूडेंट्स हैं जो आपको इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, उनका इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया. उन्होंने बताया कि वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. जो सिद्धि करके जो गर्ल थी 11th स्टैंडर्ड की, सी इज़ अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्कूल. एंड जो काव्या ठकुला थे वो डेप्यूटी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. इनको जो पोजीशन दी जाती है उनकी कैपेबिलिटी और उनके डिफरेंट टास्क के अंदर उनके परफॉर्मेंस के बेस पे दी जाती है. एंड दे आर जस्ट ए हेल्पिंग हैंड फॉर द टीचर्स एंड दिस फॉर द स्टूडेंट्स. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल द गेस्ट to please take a seat near the stage where we have made the arrangement to respected guests. You are cordially invited to take your seats and make our program special. Please, sir, please come on the stage. बैठे हुए सभी गेस्ट से विनती है कि आपका स्थान स्टेज पे ग्रहण करें. A very warm greeting to one and all who present here, honorable guests, trustee members, ma'am, audience and teachers. It gives me immense pleasure to welcome you all on this special day of our school. Today is a day of celebration, a day to honor our achievements, showcase talents and reflect the incredible journey which we had throughout the year. It's a day where our school becomes alive with the colors of joy and pride. To begin this memorable morning, I would like to extend our warm welcome to our chief guest, Krunal Panchal, who has graciously accepted our invitation.
So our special guest, this is for you. हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक आप ही काफ़ी है हमारी महफिल को स्वर्ग बनाने के लिए. So put your hands together for our special guest. So here is some words that I would like to welcome our principal ma'am. दिल को खुशी मिलती है आपके मुस्कुराने से, दिल को खुशी मिलती है आपके मुस्कुराने से, महफिल में जान आती है आपके आने से. So once again put your hands together for our principal ma'am. As per MGCVS tradition, Atiti Devo Bhava. So now time to welcome our honorable guest. So I would like to request Rajni sir to welcome Mulji Bhai Chaudhary sir, the president of Akhil Anjana Seva Mandal, with bouquet. Welcome sir on behalf of MGCS Parivar, and I would like to request the audience to welcome him with a big round of applause. Welcome sir. Now I would like to request the principal madam to welcome Amit Bhai with a bouquet. Welcome sir on behalf of MGCS Parivar. Now I would like to request Dali teacher to welcome Amrit Bhai Chaudhary sir with a bouquet. Welcome sir on behalf of MGCS Parivar. Now I would like to request Surekha teacher to welcome Gopal Bhai. सो आज हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है कृणाल पंचाल सर. सर आपके बारे में जब मुझे इंट्रो के लिए मतलब आपके इंट्रोडक्शन के बारे में मुझे जब सारी डिटेल्स मिली तो मैंने देखा कि इतने सारे पेज थे. मैंने बोला कि सर के बारे में अगर बोलने जाऊंगा तो 1 आवर लग जाएगा. सो फ्यू वर्ड्स मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ सर. पहले तो आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी and he is also author, and he had owned the various degrees in the field of education. Currently सर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में और ऑथर भी है. उन्होंने कई बुक्स लिखी है और सर की अभी एक बुक उन्होंने लिखी थी जो बेस्ट सेलर रही है. मोर देन द 6,000 कॉपीज उसकी 16,000 कॉपीज सोल्ड है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मैम टू वेलकम कृणाल सर विद द बुके. सो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि तालियां बजती रहनी चाहिए. Now, I would like to request Javnika teacher to welcome Usha madam with a bouquet. Now I would like to request Badresh sir to welcome Aarti madam. She is the principal of Samo English Medium School.
Badresh sir, please welcome Aarti madam with the bouquet. Now, I would like to request Kiran teacher to welcome Geeta Ben Chaudhary. She is a PSI and our parent. So, please welcome her with the bouquet. Now, I would like to request myself to welcome my colleague, Devji sir. स्टूडेंट्स तालियों के साथ देवजी सर का स्वागत किया जाए. I would like to request Principal Madam to welcome Pramukh Shri of Akhil Anna Seva Mandal, Rajni sir. Welcome sir. I would like to request myself to welcome the principal of MGCVS with a bouquet. Now we are moving, after the welcoming the guests, we are moving to the next program. From the nursery students, they are going to perform and want to showcase something to you. Their theme is School Chale Hum. So I would like request to our today's anchors to give some information about that. Fill hearts with joy, make memories light. Tiny steps with big dream inside. Let's begin this program with pure delight. So hey audience, क्या आपको पता है कि आज ये दिन इतना स्पेशल क्यों है और आज हम यहाँ सब इकट्ठा क्यों हुए हैं? Okay, so आराधना, क्या तुम्हें पता है? So yes, today is our annual day. Yes, Aradhana, you're absolutely right. Today is our school's annual day. So audience, are you ready? Because this day is going to be full of enjoyment, dances, dramas and many more. And our students of nursery are going to fill your day with colors. So parents, are you ready? आवाज नहीं आ रही. Now let's proceed our program. Our students of nursery are ready to sprinkle some magic on a stage by their innocent moves. गूंज उठे ये महफिल आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से, गूंज उठे ये महफिल आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से, खिल उठे हर चेहरा बच्चों की इस मुस्कुराहट से. कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसे होगा, बिन ताली के हमें यह एहसास कैसे होगा. So put your hands together for our tiny tots. Tang, tang, tang. Tang, tang, tang. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे. पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे. पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे. कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा. यूनिफॉर्म भी तुम्हारी. स्कूल देगा,
पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 प्रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा, दोपहर में खाना भी तो, और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। Student is truly amazing. Yes, it shows that how our students are interesting in this activity. So, audience, एक बार जोर से तालियां तो बनती है ना? So, audience, क्या आपको पता है कि this brilliant dance was performed and prepared by our teacher Kinjal? तो उनके लिए भी एक बार जोर से तालियां हो जाए. In this video, I'm going to cover 5 reasons why children must learn robotics. My name is Dhananjay and I am founder of Robopreneur. Now, what is robotics? Robotics is a combination of multiple technologies, which is electronics, computer science, machine design, artificial intelligence. By learning robotics, a child gets exposure to multiple technologies. Now, here are 5 reasons why children must learn robotics. Reason number 1, tech is a massive opportunity, and people who are expert in technology are not only commanding big salaries, but are also changing the world. Robotics and AI presents a massive opportunity because every industry of the future will be driven by robotics and artificial intelligence, which presents a massive opportunity for those who are expert in these technology. Reason number 2, improvement in other education areas. Learning robotics improves critical skill areas like problem solving, analytical reasoning, critical thinking. These skills improve maths and science and other education areas. Reason number 3, makes your profile much stronger. By adding robotics and artificial intelligence in your profile goes long way when it comes to admission in top colleges and universities of the world. Reason number 4, makes you part of elite group of tech creators. By starting early, you can master robotics, and that will set you ahead of others when it comes to joining a team which is working on an innovative idea or a hackathon or a college level project. Otherwise, you will always be in catch-up mode when it comes to learning or implementing certain technology. Reason number 5, it will enable children to become tech innovators and problem solvers. Technology is a powerful tool
which can be used to solve big problems of our world. Children must learn to integrate technology with problem solving. By having strong knowledge of technology and strong problem solving skill, children can break the glass ceiling of job and become tech innovators and entrepreneurs of the future. So these were the 5 reasons why children must start learning robotics from an early age. I will also share with you bonus reason on why children must start learning technology from an early age. And this is very powerful. By providing early access on tech learning on AI and robotics will enable children to start connecting dots from the environment. It's like if one does not have certain knowledge, then any knowledge which is presented to that person is going to bounce off them. If children have this exposure on AI and robotics, then since our environment, our world is full of AI, robotics, different type of examples, children will be able to connect dots, and that will enable them to grow their knowledge exponentially. So these were the reasons why children must start learning robotics from an early age. I hope this was helpful, and this will enable you to make some decisions when it comes. So this is our upcoming year planning. अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होगा तो वी विल हैव इट इन द नेक्स्ट सेशन. आप देख रहे हैं कि जो स्कूल है, इट्स विथ सो मेनी फैसिलिटीज़ आर देयर इन द स्कूल. सिर्फ फीस से ये पॉसिबल नहीं होता है. सो ये पॉसिबल होता है डोनर्स से. जो डोनर्स डोनेट करते हैं तभी हमें इतना आलीशान बिल्डिंग विथ ऑल द फैसिलिटीज़ वी आर हैविंग. सो टुडे आई वुड लाइक टू थैंक्स द डोनर, स्पेशली लास्ट ईयर जिन्होंने हमें स्मार्ट बोर्ड दिए. देयर लिस्ट इज़ हियर. चौधरी अमरूद भाई, चौधरी कांति भाई, चौधरी कमूबेन, चौधरी पुरीबेन, चौधरी रमीलाबेन, चौधरी सूरजबेन, चौधरी नारायण भाई, चौधरी संतोष बेन एंड चौधरी विपुल भाई. थैंक यू वेरी मच. आपके डोनेशन से ही आज हर एक क्लास में स्मार्ट बोर्ड, इंटरैक्टिव बोर्ड इज प्रेजेंट. थैंक यू वेरी मच. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक चौधरी दीपाली बेन एंड चौधरी सेधा भाई फॉर द वाटर कूलर, जिनकी वजह से आज हम ठंडा पानी पी सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. So let's continue with the program. Thank you all of you for being here in such a big crowd. जो भी parents जहाँ भी बैठे, you all are welcomed by us.